डियर फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ। तो आज आम डिस्कसन करवा 30 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस इंग्लिश कंटेंट एंड पेडागोजी रु आमर एटा रही 7th लर्निंग सेशन। या पूर्व 6टी लर्निंग सेशन आम इंग्लिश को लेकिन कर सारी। तो आज आमर रहिबो 30 क्वेश्चंस। तो चलतु देखिबा क्वेश्चंस कौन रही विथ एक्सप्लेनेशन आम बुझिबा एवं प्रैक्टिस करबा। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। The room was full of dash. Options are broken furnitures, some broken furnitures, a lot of furniture, many furnitures. The correct option is option C, a lot of furniture. Lot of furniture काहेकि देखंतु फर्निचर होची गोटे अनकाउंटेबल नाउन एवं आपण माने जानिछंती अनकाउंटेबल नाउन लो कोनोसी प्लुराल फॉर्म नाही। बट एठी आमे जो ऑप्शन गुडिको देखुचंती फर्स्ट ऑप्शन ले रही फर्निचर्स ब्रोकन फर्निचर्स, ऑप्शन बी रे रही मध्य सम ब्रोकन फर्निचर्स एंड ऑप्शन डी रही मेनी फर्निचर्स। तेणु जो तीनटा जाक रहिला ए तीनटा जाक होचंती ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए लॉट ऑफ फर्निचर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। ही लिव्ड इन ए डैश। ऑप्शंस आर हैप्पी लिटिल थर्स्ट हाउस, ऑप्शन बी लिटिल हैप्पी थर्स्ट हाउस, ऑप्शन सी थर्स्ट लिटिल हैप्पी हाउस, डी थर्स्ट हाउस लिटिल हैप्पी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ही लिव्ड इन ए हैप्पी लिटिल थर्स्ट हाउस। देखंतु एठी रहिला एडजेक्टिव रो ऑर्डर। एडजेक्टिव रो जो कॉमन ऑर्डर बा जो करेक्ट ऑर्डर रहउची कोन फर्स्ट आसबो ओपिनियन, नेक्स्ट साइज, देन एज, then shape, then color, then origin, then material, then purpose। एई ऑर्डर रे हमर कोन रहइबो जेतेबेले एकाधिक एडजेक्टिव्स रहउची तले एई ऑर्डर रे समान को खंचिबा को पड़िबो। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। सो फर्स्ट हमर जो थला हैप्पी, ही लिव्ड इन ए हैप्पी लिटिल थर्स्ट हाउस। हियर हैप्पी जोटा के हम कहउछन ओपिनियन एंड लिटिल एटा साइज को मैटर करछि बा साइज। नेक्स्ट थर्स्ट जोटी के असला मटेरियल कथा एंड हाउस इज द नाउन। तो ये जो तीनटा एडजेक्टिव रहिला फर्स्ट असला हमर हैप्पी जोटा के ओपिनियन को बुझेला, देन साइज लिटिल, देन असला मटेरियल। थर्स्ट कहले आपनकर जो नडा छपर घर बा रूफिंग टा जो होइता नडा छपर रहिता थर्स्ट हाउस। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, हैप्पी लिटिल थर्स्ट हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। डैश आर गुड फ्रेंड्स। एटी तीनटा डैश रही डैश 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 आर गुड फ्रेंड्स। ऑप्शन ए आई ही एंड यू, ऑप्शन बी ही आई एंड यू, ऑप्शन सी यू ही एंड आई, एंड ऑप्शन डी यू आई एंड ही। हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, यू ही एंड आई। एटी हमर देखंतु तीनटा जो रही तीनटा बिलोंग करुचंती तीनटा पर्सन को, यू ही एंड आई। यू इज द सेकंड पर्सन, ही इज द थर्ड पर्सन एंड आई इज द फर्स्ट पर्सन। जितेबाला तीनटा जिनस रोचे एटी बा तीनटा सब्जेक्ट को आम कंबाइन करके लिखिबा तो फास्ट एटी जो प्रोनाउन गुडिक रहिले हमर पोलाइट ऑर्डर रे तांको में खंजिबा को पड़िबो। पोलाइट ऑर्डर फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू सेकंड पर्सन, then the priority goes to third person and then the first person। तो आमे जेतेबेले कथा कहंती फर्स्ट तुमे से एंड मु। सो हियर द करेक्ट ऑर्डर और पोलाइट ऑर्डर इज यू फर्स्ट असला, नेक्स्ट ही, नेक्स्ट आई, जोटा कि हमर रूल ताकू कहै छै 2 3 1 रूल। एवं सही हिसाब रे हमको देखिबा को गले हियर द करेक्ट ऑप्शन इज यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स याको कहा छै पोलाइट ऑर्डर। तेणु पोलाइट ऑर्डर को हमको मानिया को पड़िबो। तेणु पोलाइट ऑर्डर को जदि हमें फॉलो करूचंदी तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीरा गोज टू स्कूल डैश ए बाइसिकल। हियर आर द प्रीपोजिशंस और ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन बाय, ऑप्शन बी with, option C on and option D
in. The correct option is option C, on. Mira goes to school on a bicycle. Generally ଯେତେବେଳେ କୌଣସି vehicle କଥା ଆସେ, कार କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ବସ୍ କଥା କହିପାରିବା, ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର କଣ ବାୟକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟୁ ହ୍ୱିଲର କଥା ଆସୁଛି ବା କୌଣସି ସାଇକେଲର କଥା ଆସୁଛି, ହର୍ସ ରାଇଡିଂ ର କଥା ଆସୁଛି, ତ ସେତେବେଳେ ଆମର ୟୁଜ ହବ ଦ କରେକ୍ଟ ପ୍ରିପୋଜିସନ ଇଜ ଅନ୍। ସୋ ହିୟର ଦ କରେକ୍ଟ ଅପସନ ଇଜ ଅପସନ ସି, ମୀରା ଗୋes ଟୁ ସ୍କୁଲ ଅନ୍ ଏ ବାଇସିକଲ। ମୀରା goes to school on a bicycle. Next question ku jiba. Next question is identify the grammatically acceptable sentence. Here are four sentences. तारि भितरु हमको देखिया को पड़ियो which is grammatically correct or acceptable. The options are how fine the weather is, how fine the weather is, how fine is the weather, how fine the weather is. देखंतु एटा फर्स्ट थिंग एटा गोटे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बुझाउछि। हाउ फाइन द वेदर इज जदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बुझाउछि ताले एक्सक्लेमेशन साइन मध्ये रहबार आवश्यकता अछि एवं जोटा कि हमर ऑप्शन बी रे रहिछि हाउ फाइन द वेदर इज। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, हाउ फाइन द वेदर इज, जोतरी कि हमर रहला एटा किते सुंदर पाग। ए जो सेंस रे हम कहू ओह पागटी केते सुंदर, तो सेतेबेले हमर कोन लागिवो एटा को हमें कहंती एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बा विस्मय सूचक वाक्य एवं तेणु विस्मय सूचक मार्क टी मध्ये रहिबार आवश्यकता रहिछि। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, हाउ फाइन द वेदर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, he was born dash. Options are at 6 p.m. on a Sunday in 1970, on a Sunday at 6 p.m. in 1970, in 1970 on a Sunday at 6 p.m., at 6 p.m. in 1970 on a Sunday. The correct option is option A, at 6 p.m. on a Sunday in 1970. कहीं की ऑप्शन ए देखो एटी टाइम रहिला, डे रहिला एंड ईयर रहिला। जेतबेले एटी तीनटा अंक टाइम को सूचौछि, पर्टिकुलर कथाटी जेतबेले आसला फर्स्ट देखो आठ कोठी लागे ना पर्टिकुलर पॉइंट ऊपर ही 8 लागे, तो टाइम पाखरे 8 लागे। तापर आसला डे रो कथा तने टू ड्यूरेशन टा टिके लॉन्ग हैला, तो एटी यूज हम कले ऑन। एंड जेतबेले ड्यूरेशन गोटे मसिया को बुझौछि बा गोटे ईयर को बुझौछि, सेतबेले ड्यूरेशन टा गोटे लंबा ड्यूरेशन ला कथा आसला सेटी हम यूज करंती इन। तेनु ही वाज बोर्न at 6 p.m. फर्स्ट आसो टाइम, नेक्स्ट आसीबो डे at 6 p.m. on a Sunday in 1970. So the correct option is option A, he was born at 6 p.m. on a Sunday in 1970. So the correct option is option A. Next question को जिबा। Next question is I have to go for dash X-ray. Options are A, on, the, some. देखो एठी जो आर्टिकल रोची ए ऑन एंड दी, तो ए ऑन दी भितरु हमर गोटे रोची डेफिनाइट आर्टिकल एंड आउ दिटा रोचन इनडेफिनाइट आर्टिकल। तो एठी तो डेफिनाइट आर्टिकल ही यूज हबो नाही, केना प्रीवियसली ता विषय कोनसी सूचित नाही बा एक्जेक्टली बा डिफाइन हे नै से। तेणु एठी हमर इनडेफिनाइट आर्टिकल ही बसिबो एवं जो इंडेफिनाइट आर्टिकल बसिबो सेटा पुनी कोन बसिबो ए और आन। हियर आन, आई हैव टू गो फॉर आन एक्स-रे, कना एक्स-रे एक्स-रे जेतबेले आसी जदिओ एक्स ता हमर कोन गोटे कंसोनेंट, किंतु जेतबेले एक्स-रे हमें कहउछथि सेतबेले तार जो प्रोनाउंसिएशन आसुची भावेल प्रोनाउंसिंग वर्ड, एटा फर्स्ट रु भावेल प्रोनाउंसिएशन आसुची। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जोटा कि हमर रहइबो option B, an. I have to go for an X-ray. I have to go for an X-ray. Next question. There are black clouds in the sky. It does. The options are may rain, will rain, is going to rain, must rain. The correct option is option C, is going to rain. There are black clouds in the sky. It is going to rain. ताले आकाश रे कौन रही
ब्लैक क्लाउड्स बा कला मेघ घनेक रही देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन स्काई आकाश रे कला मेघ घनेची एबे वर्षा हबो बा वर्षा हबाकू जाउची सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इट इज गोइंग टू रेन देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई इट इज गोइंग टू रेन so the correct option is option C. Next question, what Mrs. Nandi does these days dash please her husband? Options are don't, does not, did not, and is not. তাহলে কোশ্চেনটাকে আমি বুঝিবা হোয়াট মিসেস নন্দী ডজ দিজ ডেজ ড্যাশ প্লিজ ওহর ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମିସେସ୍ ନନ୍ଦୀ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଖୁସି କରୁନାହିଁ ସୋ ହିୟର ଦି କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ବି ଡଜ୍ ନଟ୍ What Mrs. Nandi does these days does not please her husband. ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମିସେସ୍ ନନ୍ଦୀ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ କୁ ଖୁସି କରୁ ନାହିଁ ସୋ ଦି କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ବି ଡଜ୍ ନଟ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା ହିୟର ଇଜ୍ ଏ ପାରାଗ୍ରାଫ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର 71 ରୁ ଆମର ରହିବ 75 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ क्वेश्चंस ପାରାଗ୍ରାଫ ଆମର ଦିଟା ରହିବ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମାନେ ଯୋଉଟା କି କହନ୍ତି ମାର୍କ ଫେଚିଂ ଆପଣ ଆରାମରେ ଏଥିରେ ମାର୍କ ରଖିବେ କାହିଁକିନା ଯୋଉ 10 ମାର୍କର ଦିଟା ପାରାଗ୍ରାଫ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବେ ଆରାମସେ ଆପଣ 10 ମାର୍କସର ଆନ୍ସର ଏଠି ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ 10 ମାର୍କସ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଚିଭ କରିପାରିବେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ବେନିଫିସିଆଲ ହବ ବା ଆସେଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଢିବା ଆମେ ପାରାଗ୍ରାଫଟିକୁ My hobby is collecting stamps. When I began, I collected the stamps of all countries, but there are so many. So now I collect only Greek and Indian ones because I have friends in Greece and I live in India. Some of my stamps are very pretty and they are all interesting. When you look at stamps carefully, they teach you a lot about the history of their country. My small brother's hobby is watching trains. He goes to our station and watches them there. When an engine goes through the station, he notes down its name and number. He likes watching trains very much, but I don't. Next, my big sister's hobby is sewing. She has not got a sewing machine, but she sews with our mothers. She makes most of her clothes, and when I tear my shirt or my trousers, I take them to her and she mends them. My father has a hobby too. It is gardening. Every Saturday or Sunday afternoon, and sometimes on other summer evening too. He digs or plants flowers or cuts the thick grass. तो ये थिला हमरो पाराग्राफटी जो पाराग्राफटी उपरे हमरो हॉबी जहा कि गोटे छोट पिलार एवं ता सहित से केमती स्टाम्प कलेक्शन करूची इंडियन स्टाम्प ग्रीस रो स्टाम्प एवं ता सहित भाई रो केमती हॉबी रहिची वाचिंग ट्रेन्स अर्थात स्टेशन ले जाई ट्रेन को देखिबा तार नंबर नोट करिबा ए सब हॉबी रहिची ता सहित तार जो बड़ भौणी रहुची से बड़ भौणी हॉबी मध्ये रहिची जो जेमति कि स्विमिंग करिबा अर्थात सिलाई करिबा एवं ता सहित ता बापांकर मध्ये हॉबी रहिची जोटा कि गार्डनिंग बेले बेले से कोन करंती सैटरडे और संडे आफ्टरनून ले से गार्डनिंग करंती एवं अलगा जो समर इवनिंग रहिची मध्ये से समरे मध्ये से खोलाखोली करंती प्लांट करंती फ्लावर प्लांटिंग करंती और ता काटिबा एवं थिक ग्रास जो रहुची हमरो ताकू काटिबा ए सब प्रकार से कार्य करंती तो एटी कहया बोले समानकर हॉबी ऊपर विशेष करके पैराग्राफ टी रहिची एवं से पैराग्राफ रो जो क्वेश्चंस रहिची 71 लो 75 पर्यंत हमें तार ऊपर वर्तमान डिस्कशन करिबा here are the questions the first question is here the passage is about dash stamp collecting gardening hobbies sewing here the correct option is option C the correct option is option C hobbies आम ए डिस्कसन करूले ताले जो पैसेज टी हेची जो भाईटे रहिला तार आउ गोटे छोट भाई रहिला गोटे बड़ भौणी रहिला एवं ता बापांकर
ए समस्तकर हॉबी उपरे ए पैसेज टी डिस्क्राइब हिज सो हियर द पैसेज इज अबाउट हॉबीज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन stamps teach you dash of the country the climate the historical sites the history the people the correct option is option C the history कार हिस्ट्री से कंट्री रो हिस्ट्री स्टाम्प्स टीच यू द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री स्टाम्प रे विभिन्न समय आपनकर रानीकर फोटोचित्र थिबो बा मुद्रार फोटोचित्र थिबो बा कोनोसी अति माने पॉपुलर प्लेस रो फोटोचित्र थिबो जोटा को नै कि हमर स्टाम्प मेकिंग होई थाए तेनु स्टाम्प विषय आमे स्टाम्प रो आमे कोन जानि परबा द हिस्ट्री बा कोनोसी कंट्री रो हिस्ट्री संपर्क रे हमको ज्ञान मिलि थाए सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज he collects Greek stamps only because dash. Greece is beautiful country. She is known for her heroes. His friends live there. Tourists visit the country. Here the correct option is option C. His friends live there. से ग्रीक रो स्टाम्प को केवल कलेक्ट करूथला काहे कि ना तारो सांगो सेठारे रहउतला तेणु कलेक्ट करिवा ता पई सहज साध्य थिला सो ही collects Greek stamps only because his friends live there. The correct option is option C. Next question को जिबा his father works in the garden because dash he enjoys working. Summer evenings are longer. He loves plants and flowers. It is his hobby. The correct option is option D. It is his hobby. देखो केते सुंदर भावरे आपण ए प्रश्न गुडिकर आंसर करि परिबे बहुत सहज जदिओ बेले बेले कौन लगे तो जो क्वेश्चन जो हमर ऑप्शन गुडे को थाए बेले बेले हमको लागे कि नाही एटा हबो कि सेटा हबो तो तार भीतर हम टिके पुनी मुंडो खर्च करिवार अछि तो तार भीतर हमको लक्ष्य करिवार अछि कोटा मोर करेक्ट तो सही जगह रे हमको क्लिक करिवार अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा सी मेड्स माय शर्ट मेड्स मींस डैश ब्रशेस रिपेयर्स शूज एंड वॉशेस The correct option is option B repairs. एटी टियर रा कथा फास्ट कहितला पैसेज रे जेते बेले तार बा तांकर जो पैंट शर्ट कोनसी प्रकार चिरी जाउची सेते बेले सीता दीदी को दियंती बा बड़ भूण की दियंती रिपेयर करिया पाए तो ये एटी जो मेंट रहिची से मेंट रो अर्थ होची कोन रिपेयर सी मेंट्स माय शर्ट मेंट्स मींस रिपेयर्स द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी repairs next question को जिबा next question ये रहिला हमरो आउ गुडे पैसेज जो पैसेज हमें प्रीवियसली देखले वर्तमान से पैसेज रे हमरो 71 रु 75 पर्यंत बा 71 रु 75 पर्यंत जो क्वेश्चंस थिला हमें ताको देखिले एवं आंसर करले तो एठी मध्ये सेही भली भाबरे आउ गुडे पैसेज रहिछि जोथि कि हमें 76 रु 80 नंबर पर्यंत जो क्वेश्चंस अछि ताको मध्ये देखिबा एवं से अनुसार हमें तार आंसर करिबा देखो here is the passage Guglielmo Marconi the inventor of radio finding limited interest in his work in Italy in early 1896 at the age of 21 traveled to London to seek support for his work while there he gained the interest and support of William Press of the British Post Office a series of demonstrations for the British government followed. By March 1897, Marconi had transmitted Morse code signals over the Salisbury Plain, a distance of about 3.7 miles. In May 1897, Marconi sent the first ever wireless communication over open sea. It traversed the Bristol Channel. The message in Morse code read, "Are you ready?" Impressed by this and other demonstrations, Press introduced Marconi ongoing work to the general public at two important London lectures. तो ये थिला पैसेज तो पैसेज को नेकी वर्तमान हमर क्वेश्चंस रही तो क्वेश्चन देखो एटी मार्कोनी जे कि रेडियो रो उद्भावक तांकरी ऊपर रही एवं तांकर जो हमर कम्युनिकेशन एवं से जो कोड मर्स कोड कथा कुआई एवं केमती तांकर लंडन ला यात्रा एवं ता सहित तांकर होम कंट्री ए सब विषय रे हमें
ए पैराग्राफ रु जानिले तो पैराग्राफ रु वर्तमान आमे क्वेश्चन गुडी को जो रही से क्वेश्चन गुडी को आंसर करबा देखो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर मार्कोनिस होम कंट्री वाज डैश ऑप्शंस आर इंग्लैंड इटली फ्रांस यूनाइटेड स्टेट्स द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इटली मार्कोनिस होम कंट्री वाज इटली नेक्स्ट क्वेश्चन इज the original radio signals of Marconi were dash Morse code, voice transmissions, music over water. The correct option is option A, Morse code. Next question. Marconi journeyed to London because dash he was attracted by the English. He was in search of a life partner. He wanted to call on the Queen. He sought support for his work. The correct option is option D. He sought support for his work. से जितबले जॉइनिंग कले लंडन को काहे की कले बिकॉज़ ही sought support for his work ताको मिली गला सपोर्ट ताकर काम पई सेथि पई से जॉइनिंग कले लंडन को नेक्स्ट क्वेश्चन द पर्सन हु मेड मार्कोनी पॉपुलर वाज डैश द क्वीन ऑफ इंग्लैंड प्रेस हिज वाइफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी प्रेस कने ताको ही ये कहला बळे रिकॉग्नाइज करथिले एवं तांकरी पाई मार्कोनी पॉपुलर हेतिले द पर्सन हु मेड मार्कोनी पॉपुलर वाज प्रेस नेक्स्ट क्वेश्चन मार्कोनी हैड ट्रांसमिटेड मोर्स कोड सिग्नल्स द वर्ड ट्रांसमिटेड इन द सेंटेंस मींस डैश टू सेंड एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल टू सेंड एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू पास digits from one person to another to transfer something from one place to another देखो तो ताकर जो कार्यक्रम थिला टू इन्वेंट रेडियो अर्थात से रेडियो सिग्नल ऊपर ही से काम करथिले तेनु ट्रांसमिट अर्थ एटी कोन टू सेंड एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए टू सेंड एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मार्कोनी हैड ट्रांसमिटेड मोर्स कोड सिग्नल्स द वर्ड ट्रांसमिटेड इन द सेंटेंस मींस टू सेंड एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल तो वर्तमान आमर 81 क्वेश्चन रु आमे 90 पर्यंत जो रहिला आमर ये रहइबो आमर मेथड बेस्ड अर्थात आमर कंटेंट बेस्ड जहा तिला आमे ताको आलोचना करले वर्तमान आमर जो 10 मार्क्स रो रहउची सेटा रहउची आमर मेथड एरिया रु तो मेथड एरिया ऊपर वर्तमान में डिस्कशन करिवा फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर 81 लर्निंग ए लैंग्वेज मींस डैश लर्निंग ऑल द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज learning and using the language skills in appropriate situations, learning to speak fluently in public, writing good books in that language. Here the correct option is option B, learning and using the language skills in appropriate situation. English कौनसी language को learn करिबा बा सिखिबा भाषा सिखिबा तार अर्थ कोन जे से भाषा को सिखि कि ताको हमें contextually यूज करि परिबा जोटी के appropriate situation ले यूज करि परिबा सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी लर्निंग एंड यूजिंग सिखिबा एवं ताको व्यवहार करिबा द लैंग्वेज स्किल्स इन एप्रोप्रिएट सिचुएशन हमकु जेतेबेले जो सिचुएशनल आवश्यकता अछि से आवश्यकता भितरे जदि आमे से लैंग्वेज को यूज करि परले ताले सेटा होची लैंग्वेज लर्निंग रो मीन्स सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी लर्निंग एंड यूजिंग द लैंग्वेज स्किल्स इन एप्रोप्रिएट सिचुएशंस Next question. Studying English as a second language will help us dash to speak like the English, to read Shakespeare and other poets to know their culture, to open window to the knowledge of the world, to go round the world as tourists without problems. It main theme कौन रहिला फोकस कोठी हवा दरकार जेतबेले हमें इंग्लिश को पढुचंदी आज सेकंड लैंग्वेज स्टडिंग इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज तो सी हम कोथरे सहायता करछि टू स्पीक लाइक द इंग्लिश इंग्लिश भलिया हमें कहबा इंग्लिश मतलब एठी इंग्लिश पीपल को बुझौछि बा से जाति के बुझौछि हियर इंग्लिश मतलब इंग्लिश रो जाति के बुझौछि बा जो लोक माने कि इंग्लिश को बिलोंग करछथि तो एठी सेमती टू रीड शेक्सपियर एंड अदर पोएट्स टू नो देयर कल्चर जे सेहिति पई शेक्सपियर आ अदर पोएट्स जो रहिछथि ताकर कल्चर को जानिया पई बा तांकर पोएट पढि कि से कल्चर को जानिया पई हमें कोन इंग्लिश सिखिबा और टू ओपन विंडो टू द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड बा जो नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड रो जो नॉलेज रहिछि
ताकू गेन करबा जोटा कि टू ओपन विंडो अर्थात समस्त प्रकार नॉलेज पाई जे हमर रास्ता तैयारी करिवो सेथि पाई कि यस टू ओपन विंडो टू द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड ताले ये कोन करे ओपन कर देबो आपनकर विंडो को जहा फल कि आपनकर जो नॉलेज को आपण बढ़ाई परिबे टू गेन द नॉलेज केना आपण जानि चंती बहुत संख्यक बही रही जोटा कि इंग्लिश लैंग्वेज रे रही तेणु आम ब्रॉडली जदि चिंता करवा जदि आमर एक्सपोजर को आम बढ़ाई चाहिए आउटलुक को बढ़ाई चाहिए पढ़ाई चाहिए बढ़ाई चाहिए तो ये निश्चित भाव में आम गोटे हेल्पफुल लैंग्वेज सो स्टडिंग इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज विल हेल्प अस टू ओपन विंडो टू द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड सो हियर द ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 83 which is not a guiding principle of NCF 2005. Options are connecting knowledge to life outside the school, ensuring children providing job opportunity, ensuring learning shifted away from the rote methods, making examinations more flexible. ताले एठी से कोन कहूची which is not a guiding principle of NCF 2005 कोउटा कहू ना कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल ये ठीक अछि ये गाइड करूछि एंड एंश्योरिंग चिल्ड्रन प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटी ना एटा एंश्योर करू नाही एनसीएफ 2005 जो रहला नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क यह केबे भी एंश्योर करू नै जे गोटे जॉब अपॉर्चुनिटी दवा पाए काहा को छुआ बट इट एंश्योरिंग लर्निंग शिफ्टेड अवे फ्रॉम द रॉट मेथड्स कहले जो घोषा पद्धति रही घोषा पद्धति मुक्त निश्चय कर मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एवं एग्जामिनेशन को ये निश्चित फ्लेक्सिबल करिछि कहना एग्जामिनेशन वर्तमान गोटे बर्डन हिसाब रे नाही तो ये वर्तमान फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड तेणु एठी जो हमर ऑप्शंस रहला कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल इट इज करेक्ट ensuring learning shifted away from the rut methods it is also correct making examinations more flexible it is also correct किंतु जोटा की which is not a guiding principle that is option B ensuring children providing job opportunity so here the correct option is option B so here the correct option is option B ensuring children providing job opportunity is not a guiding principle of NCF 2005 ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट ट्रू इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड ऑप्शन बी लर्निंग इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन इंग्लिश ब्रिज द गैप बिटवीन स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट मदर टंग्स इंग्लिश हार्डली फाइंड्स इट्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटीज देखो which is not true English the most widely spoken language in the world it is true learning English is important for pursuing higher education it is also true English bridges the gap between speakers of different mother tongues it is also true but English hardly finds its place at the center of all international activities it is not true so here the correct option is option D English hardly finds its place हार्डली फाइंड इट्स प्लेस सबुठारु आदृत होतुवा भाषा होची इंग्लिश एवं तार जो रहिछि डिग्निटी सबुठारु अधिका इन द वर्ल्ड तेणु हियर द ऑप्शन डी इज करेक्ट द व्हिच इज नॉट ट्रू एठरे ए जो स्टेटमेंट टी कहैछि द ऑप्शन डी इट्स नॉट ट्रू नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन द लर्नर्स इन द क्लासरूम आर फाउंड डैश लर्निंग इज इफेक्टिव when the learners in the classroom are found as options are quite interactive passive very slow preparing the lessons the correct option is option B interactive learning is effective when the learners in the classroom are found interactive जदि पिला माने इंटरैक्ट करूछंती एवं से इंटरैक्शन टा टीचर सहित रहउची प्रतिटी क्वेश्चन ला आंसर करिया पई चेष्टा करूछंती इंटरैक्ट करूछंती एवं सब किसी जिनस बुझुचंती कांसेप्ट क्लियर होउचंती तो सेते बेले ही कोन होबो लर्निंग हमर इफेक्टिव हे परिबो सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन द लर्नर्स इन द क्लासरूम आर फाउंड इंटरएक्टिव नेक्स्ट क्वेश्चन
reading stories, novels, comics and cartoons facilitates dash reading. Facilitates dash reading, intensive, extensive, loud or shadow. Reading stories, novels, comics and cartoons facilitates dash reading, intensive reading, extensive reading, loud reading or shadow reading. The correct option is option B, extensive reading. केमती extensive reading? Extensive reading कहले कौन ना आमर जो आउटलुक अच्छी बा नॉलेज जोटा कि आमे एक्वायर करिया पई चाहउछंती जोटा कि आउटसाइड नॉलेज आमे कहि परिबा ताको तेनु आमे जदी स्टोरी बुक पढुछंती नोवेल पढुछंती बा कॉमिक्स पढुछंती कार्टून्स पढुछंती एटा कोन करे ना हमरो आउटसाइड जो नॉलेज रहला ताको आमे गेन करिया पई हमकु सुविधा हुए बा आमे सेही माध्यम रे ही गेन करंती एवं खुशी पाई मध्य पढंती फॉर आवर एन्जॉयमेंट एक्सटेंसिव रीडिंग जोटा मैं कहै छै तेनु हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, extensive reading. Reading stories, novels, comics and cartoons facilitates extensive reading. Next question, generalization and organization of ideas. Generalization and organization of ideas, sequencing, cohesion and use of vocabulary are the sub skills of dash reading, writing, speaking, listening. The correct option is option B, writing. Writing रो ये होची गोटिए गोटिए सब स्किल. Generalization and organization of ideas, sequencing, cohesion and use of vocabulary. ए सबु जिंस हमर को गोटिए गोटिए सब स्किल कार ना राइटिंग रो कने लिखला बळे ए सबु जिंस हमर आसे जोतरे कि जनरलाइज करिबा बा ऑर्गेनाइज करिबा आइडिया को एवं ताको ऑर्डरली मेंशन करिबा लिखिबा cohesion and use of vocabulary are the sub skills of writing. So here the correct option is option B. Next question को जिबा, according to the language teaching experts the early education of a child should be in dash, first language, second language, foreign language, multi language. The correct option is option A, first language. आपण जानि छथि वर्तमान समय रे एनईपी 2020 आसला परे बा लागू हैला परे हमर फोकस कोटा को करा होची ना पिला को तार मदर टंग रे पढिबा पय एवं मदर टंग कोटा ता पय ना तार फर्स्ट लैंग्वेज ता ही तार मदर टंग जेमति हमर एफएलओ फर्स्ट लैंग्वेज ओडिया तेनु मदर टंग रे जदि पिला पढुची ताने कांसेप्ट क्लियर होवार चांस ता अधिक रह बा मदर टंग रे ही बा फर्स्ट लैंग्वेज जदि पढुची तार सब प्रकार मैथ हो साइंस हो मैथ साइंस ईवीएस ए जहा जहा जिंस रहिची ए सब गुडिकर जो कांसेप्ट रहि से गुडिकर से आराम रे ताको कैप्चर कर परिबो बा ताको डाइजेस्ट करिवो से. So here the correct option is option A. According to the language teaching experts, the early education of a child should be in first language. Next question को जिबा, which of the following is not a basic mechanic of reading at elementary level? Options are word reading, option B picture reading, newspaper reading, phrase reading. The correct option is option C, newspaper reading. Which of the following is not a basic mechanic of reading at elementary level? Word reading हबो, picture reading हबो, ए सब जिंस हबो किंतु न्यूज़पेपर रीडिंग एटा गुटे एलिमेंटरी लेवल ले गुटे बेसिक मैकेनिक बोली धरा जाय ना. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, न्यूज़पेपर रीडिंग. न्यूज़पेपर रीडिंग इज नॉट a basic mechanic of reading at elementary level. Next question and the last question for this session. In continuous comprehensive evaluation, the teacher tries to dash. Options are find out to what extent the learning objectives are achieved. Option B, make the learner assess the teacher. Option C, identify special needs of the learners in group. Option D, make the learner by cramming learning. The correct option is option A, find out to what extent the learning objectives are achieved. जोटा कि हमर सीसी हमें कहउछन कंटीन्यूअस कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो पद्धति हमर रहिला जोथरे कि जने शिक्षक कोन चेष्टा करे करिया टू फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव तने केते मात्रा रे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स गुडा को अचीव होउची जहा फल कि माने ताकर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सेट में हमें गोटे प्रोसेस बोली को मध्य कहंती. तो ए जो प्रोसेस लर्निंग प्रोसेस तो एथिरे आमे जानिया पई चाहती बा आमे जहा पढिले
केते मात्रा रे आमे सफलता पाई बा पिला केते मात्रा रे ताको रिसीव कला केते ताको कैच कला तेनो फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड ताले एटा आमे जानिया पे निहाती चाहती बा गोटे टीचर चाहे सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इन कंटीन्यूअस कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन द टीचर ट्राइज टू फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड तो ये थिला हमरो 30 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस फ्रॉम कंटेंट एरिया एंड 10 क्वेश्चंस फ्रॉम मेथड एरिया तो जो थ्री के हमें विथ एक्सप्लेनेशन 30 क्वेश्चन को डिस्कशन कले ये थिला हमर 7th लर्निंग सेशन मु आशा करूची आपण मानकू लर्निंग सेशन टी निश्चय भलो लागिथिबो एवं जदि भलो लागिथाय तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे एवं बेल आइकन ऊपर क्लिक करबे जेंति फास्ट लर्निंग सेशन ला बा फास्ट लर्निंग अपडेट रो वीडियो टी आपण को पाखरे फास्ट ही पहुंची तो पुणी देखा हबो आ गोटे लर्निंग सेशन सहित टिल देन बाय बाय नमस्कार जय जगन्नाथ।